Hello everyone, welcome to Youth Power Academy, YPA Bharat Daily News Recap. Let us begin class of 8 August. The first news is related to India, which is going to host first Global South Film Festival next year. And this announcement was made during a press conference convened on the sidelines of a Waves Bazaar in Mumbai. This event serves as a platform for revealing multiple agreements designed to foster and enhance international cooperation within the film and entertainment industry. During this event, key Indian organizations such as National Film Development Corporation and National Film Archive of India formalized agreements, exchanged letters, in discussion with their partner institutions from various nations, including Brazil, Russia, and Vietnam. And a significant outcome of this engagement was a mutual agreement among the participant organizations to actively explore opportunities for film co production. If we talk about the Global Film Festival, uh, which will be hosted by India next year, it will focus on cinema from Global South region. And what does Global South means? Global South refers to countries often classified as developing or newly industrialized, predominantly located in Asia, Africa, and Latin America. This is contrast to the global north, which generally includes developed countries, which are North America, Europe, parts of Asia, Oceanasia, and India, through its diplomatic efforts, is trying to strengthen the ties within these regions and promoting its soft power through cinema. तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा कि नेक्स्ट ईयर ये कहाँ पे जो है वो ग्लोबल साउथ फिल्म फेस्टिवल होगा. Then next article is related to 12th National Handloom Day celebrations and awards 2025. President of India Draupadi Murmu, she graced the 12th National Handloom Day celebrations and presented Sant Kabir Handloom Awards and National Handloom Awards 2025 at the Rashtrapati Bhavan Cultural Center, New Delhi on August 8. During the ceremony, four commemorative posted stamps celebrating India's rich and diverse handloom weaving traditions were released. It was given on 7th August. She noted that Swadeshi movement, which was formally launched on 7 August 1905, and it was initiated in protest against the partition of Bengal. उस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट थी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने पार्टीशन किया था बंगाल का और उसका एम इसके अगेंस्ट में स्वदेशी मूवमेंट को जो है वो लेके आया गया और इट वाज एम टू प्रमोट इंडिजिनस गुड की मतलब लोगों को ये जागरूकता रह गई कि आप अपने जो घरेलू जो सामान है उनका यूज करिए डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज का जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद जो यूरोपियन कंट्रीज थी जो ब्रिटिश कंपनीज थी उनके प्रोडक्ट्स को इंडिया में भेजा जा रहा था क्योंकि इंडिया जो है उस टाइम पे उनका रूल था और उससे जो इंडिया की इकोनॉमी थी उसका पूरा एक ड्रेनेज हो रहा था ड्रेन हो रहा था और उस टाइम पे स्वदेशी मूवमेंट को लेके फिर आया गया तो ये काफी एक इम्पॉर्टेंट इवेंट रहा है इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल रहा है उसमें और ये हिस्टोरिकल इवेंट है तो इस दिन 7 अगस्त को हम लोग नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट करते हैं सिंस 2015 and Sant Kabir Handloom Award. It is the highest honor for handloom weavers, which recognizes their extraordinary craftsmanship, their dedication, and their contribution towards preserving and promoting Indian weaving tradition. तो ये काफी important रहेगा और we can see in the background information that the National Handloom Day was first inaugurated by PM Modi on August 7, 2015 in Chennai, coinciding with the 110th anniversary of the Swadeshi movement. And this date was chosen to remember the formal launch of Swadeshi movement in 1905. And if we talk about handloom weaving, it is one of India's oldest and most important rural industries.
It support over 4.3 million people, of whom 77% are women. This sector deeply intertwined with regional identity and famous clusters like Banarasi silk in Varanasi, कांचीपुरम सिल्क इन तमिलनाडु, जैसे ये रीजन का नाम और उससे लोकेटेड जो हैंडलूम है ये भी इम्पोर्टेंट है। चंदेरी इज इन मध्य प्रदेश, पोचमपल्ली इन तेलंगाना। तो जो रीजनल आइडेंटिटी है उनको ये दर्शाते हैं। और ये जो हमारा हैंडलूम डे है इसको सेलिब्रेट किया जाता है टू ऑनर द हैंडलूम सेक्टर एंड कमेमोरेट द लॉन्च ऑफ स्वदेशी मूवमेंट ऑफ 1905। और इसमें जो इसमें थ्री जो वीवर्स हैं उनको जो अवार्ड दिए गए हैं ये इम्पोर्टेंट रहेगा। ये है राम मेहर, जिनको कि बिचित पार खादी साड़ी, जो कि उड़ीसा के हैं, उनके लिए दिया गया है। और रुनिमा चेतिया चौधरी, इनको मूगा सिल्क साड़ी के लिए अवार्ड दिया गया है। उत्तर प्रदेश के शाह मोहम्मद अंसारी, ये इंपॉर्टेंट रहेगा यूपी पीसेस के लिए, इनको जरफबाफ्ट शेवांतवरी अवध जामदानी साड़ी के लिए ये अवार्ड दिया गया है। तो ये जो तीनों अवार्ड्स हैं इंपॉर्टेंट रहेगा यूपी पीसेस के में, क्योंकि यूपी से रिलेटेड एक वीवर को प्रोवाइड किया गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसको आप याद रखिएगा तीनों नेम्स। Then in Parliament, government informed about the pharmacovigilance program for Ayush drugs. Ministry of Ayush has been implementing the pharmacovigilance program for Ayush drugs since 2018 to monitor their safety through surveillance, reporting, and assessment of suspected adverse drug reactions, thereby promoting their safe and rational use. The program was incorporated under the Ayush औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना in 2021 to enhance the tracking of reported misleading advertisements, objectionable advertisements, and adverse drug reactions. The Ministry of Ayush launched an IT-enabled online portal which is named Ayush Suraksha in 2025. तो ये भी आप इसको याद रखिएगा। और आयुष is an acronym representing India's traditional medicine system, which includes Ayurveda, yoga, naturopathy, Unani, Siddha, and homeopathy. तो important रहेगा। And this ministry was formed in 2014. ये मैं कई बार अपने वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ। और फार्मेको विजिलेंस ये एक कॉन्सेप्ट है, ये काफी क्रूशियल एस्पेक्ट है कि जो मेडिसिन है इंश्योर करती है गवर्नमेंट कि ये दीज आर सेफ फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन और इनके कोई इफेक्ट्स ऐसे ना हो जिनकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो। तो ये है। और आप चैनल पे हमसे ज्यादा कनेक्ट होइए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। यू कैन डाउनलोड आवर मैगजीन फ्रॉम द यूट्यूब डिस्क्रिप्शन. A link has been provided in the description, and kindly read these magazines. These are very important. The articles are all relevant articles, and the background information and keywords are also very important for your examination purpose. अगर आप डेली इनको पढ़ते हैं तो आपका रिवीजन भी होता है, स्टैटिक पोर्शन का भी, और आपके एग्जामिनेशन में आपका कॉन्फिडेंस इससे बढ़ेगा। आप आज इजीली क्वेश्चंस को जो है वो कर पाएंगे। और इसके अलावा जो हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, वहां पे भी आप कनेक्ट होइए हमसे। देन नेक्स्ट आर्टिकल is also related to traditional medicine system, Sova Rigpa. What is the meaning of Sova Rigpa? It means knowledge of healing in Bhuti language, and it stands as one of world's most ancient traditional medicine system. It has received the official recognition from Government of India, being integrated with the Ayush framework. तो सोवा रिक्पा ये आप important है, and it is actively participated throughout the Indian Himalayan region, and it extends its influence to several other neighboring countries. तो सोवा रिक्पा ट्रेडिशनल सिस्टम है ये मेडिसिन का। और हिमालयाज़ में जो है ये काफ़ी इसका प्रचलन है, और भूती लैंग्वेज में इसका मतलब जो है वो भूती लैंग्वेज आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और ये भूती लैंग्वेज या जो भूतिया भाषा है ये हिमालयन रीजन में और वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग, लद्दाख, सिक्किम, इन सब एरियाज में जो है वो पूरा इसका प्रचलन है।
The next article is related to PM Yashasvi scheme, which is a scheme that empower students higher education journey. And if we talk about this scheme, it was launched in 2020-21. It is a flagship initiative by the Government of India, and it promotes educational equity. Uh, it recognizes academic potential and provided crucial financial assistance, alleviating the financial burden. Uh, Through this scheme, government provide from 75,000 to 1 lakh uh, of scholarship to the students of other backward classes, EBC or economically backward classes, and denotified tribes, and it provided the support to them. It especially target the OBC community और and other classes who faces financial burden. So इन ये जो स्कीम है इसके थ्रू बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो कंडीशन है उसमें बेटरमेंट हुआ है। और जैसे कि हम देख सकते हैं कि इस आर्टिकल में एक स्टूडेंट है उनके बारे में बताया गया है, इंफॉर्मेशन बताया गया है कि कैसे थ्रू दिस स्कीम उनको हेल्प मिला और इनको ये इजीली शी इज परस्यूइंग हर मास्टर्स डिग्री एट अ प्रीमियर इंस्टीट्यूशन। तो मतलब ये काफी हेल्पफुल है ऐसे बच्चे जो उनका एजुकेशन में एम्बिशन है, आगे पढ़ना चाहते हैं, बट ड्यू टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट दे आर नॉट एबल टू परस्यू देयर स्टडीज। उनके लिए गवर्नमेंट की ये पीएम यशस्वी स्कीम है। तो ये स्कीम इंपॉर्टेंट रहेगी, इसका लॉन्च डेट एंड फॉर हुम दिस स्कीम इज लाइक ओबीसी, ईबीसी एंड डीएनटी स्टूडेंट। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। The next article is related to the passage of a new bill, e-bill aimed at resolving payment delays and simplifying dispute resolution, specifically benefiting micro, small, and medium enterprises. The pre-provision of this legislation mandates that all central public sector enterprises must settle invoices for goods and services procured from MSME exclusively through Trade Receivables Discounting System, that is TREDS. What is this? This system was introduced by Reserve Bank of India to address the challenge of delayed payment which is faced by micro, small and medium enterprises. And these enterprises often struggle with liquidity ड्यू टू एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड फ्रॉम देयर बायर्स। मतलब उनसे सामान लोग खेत खरीद लेते हैं जो लार्ज कॉर्पोरेट्स हैं और जो पीएसयूज हैं, देन उनको वो पेमेंट नहीं करते, तो उनकी वजह से काफी प्रॉब्लम होती है। तो इसी वजह से आरबीआई ये सिस्टम लेके आई थी। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि ये किस चीज से रिलेटेड है। And this platform enable MSMEs to convert their traditional receivables into liquid funds by having them financed by various financiers, banks, NBFCs at competitive rates. तो ये इससे जो है वो it is providing a safeguard to the suppliers, and this legislation mandates that if a case has been pending for over 6 months, at least 50% of the awarded amount must be paid to the supplier। मतलब अगर प्रॉब्लम है तो 50% तो सप्लायर को जो है वो उनको पे करना होगा। और regarding dispute resolution, this bill stipulates that if mediation attempts fail, a reference for arbitration must be within 30 days from the date of mediation termination। So this is a very important bill for MSME sector। Then India formally names 27 places in Arunachal Pradesh. In response to repeated attempts by China to rename places in Arunachal Pradesh, India has formally identified and officially mapped 27 locations within the state. These include geographical features such as land, passes, lakes, and monuments. Union Home Ministry stated that this formal identification on the Survey of India map is intended to ensure accurate recognition and enhance public awareness. Among the 27 officially marked locations in Longzhou, situated along the line of actual control, this area was a significant flashpoint in 1959 when Chinese forces entered it.
The list also features Bisa village, which is a strategically important high altitude mountain pass. तो इनका location important है. And the identified locations also include Thangla, which is a high altitude pass that was the site of opening battle between Indian and Chinese forces in 1962. This pass has been formally recognized on the official map. India has consistently rejected China's efforts to assign what it termed fictitious name to Indian territory. मतलब इंडिया के जो टेरिटरीज है उनको चाइना अपना नाम देती है. तो इसको लेके न्यू दिल्ली ने काफी असर्टिवनेस दिखाई है कि ऐसे अटेम्प्ट्स को जो है वो करने से जो रियलिटी है दैट विल नॉट चेंज, and it will hinder the process of normalizing the bilateral relationship between the two countries. इंडिया और चाइना के बीच में भी एक लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज रहे हैं. जो हमारा प्राइम कंसर्न है वो अक्साई चीन रीजन है और अरुणाचल प्रदेश है. चाइना क्लेम करता है अरुणाचल प्रदेश को एज साउथ तिब्बत, और इंडिया इसको कंप्लीटली रिजेक्ट करता है, और इंडिया का पार्ट है जो अरुणाचल प्रदेश है हमारा पूरा. और जो डिस्प्यूटेड बॉर्डर है इसको often referred as McMahon Line in the eastern sector, and it has been a source of tension and occasional conflict between India and China. एंड इफ इट टॉक अबाउट चाइना, चाइना का हर कंट्री के साथ जो है वो कुछ ना कुछ टेरिटोरियल डिस्प्यूट है. और साउथ ईस्ट एशिया में जो साउथ चाइना सी है, साउथ चाइना सी, वहां पे भी इनकी सारी कंट्रीज के साथ ऑलमोस्ट डिस्प्यूट है. हर किसी कंट्री को ये क्लेम करते रहते हैं एज अ अपना पार्ट. तो चाइना जो है वो एक काफी ट्रस्टेड पार्टनर नहीं है. चाइना पे हमेशा जो है वो एक वो रहता है कि ये अरुणाचल प्रदेश में स्पेशली जो इधर भी जिनकी जो एक्टिविटीज हैं काफी बड़ी हैं, तो इस पे इंडियन गवर्नमेंट का एक स्ट्रॉन्ग जो है वो रिएक्शन रहा है. Then the next important article is related to defense and security, the Joint Defense Agreement, which was signed by Pakistan, Saudi Arabia, and Turkey. They have signed a joint defense agreement in Makkah and is establishing a commitment to collective defense and collective deterrence. This pact is significant as Saudi Arabia is currently facing attacks from Yemen Houthis, and the broader Western Asian region remain embroiled in the conflict against Iran. The agreement unites an oil-rich Persian Gulf kingdom, Saudi Arabia, South Asian nuclear power Pakistan, and a NATO member Turkey. This pact explicitly states that an armed attack against any one of the signatory nation will be considered an attack against all of them, aiming to bolster collective deterrence. तो मतलब इनके बीच में ये पैक्ट हुआ है. तो ये एक नए तरह के इसका जो है वो एक देखा जा रहा है. अगर हम बात करें वर्ल्ड लेवल पे, तो एक नया ग्रुप ये फॉर्म हुआ है. एंड दिस एग्रीमेंट वाज फॉर्मलाइज्ड एट मक्का अल Mukarram Summit for Joint Defense. And the attendees were Saudi Crown Prince, Prime Minister Mohammed bin Salman, Turkish President Recep Tayyip Erdogan, and Pakistani Prime Minister शहबाज शरीफ. तो ये मक्का एग्रीमेंट ये काफी इंपॉर्टेंट है, और आगे आने वाले टाइम में इसके और भी इम्प्लीकेशंस होंगे. The leaders from these countries reviewed the bilateral relations among these three countries and discussed regional issues prior to signing the Makkah Joint Defense Agreement. And Turkish government described the agreement as a defense-oriented partnership, explicitly targeting any specific country. तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा. जैसे हमने देखा था कि पहलगाम हमले के बाद इंडिया और टर्की के रिलेशंस काफी खराब हो गए थे. टर्की ने पूरी तरह से पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, जबकि पाकिस्तान ने टेररिस्ट अटैक किया था इंडिया पे उसके बाद से. तो इंडिया को भी इसको पूरे जो सीन है उसको और बेहतर तरीके से देखना होगा कि कैसे फिर इनके अगेंस्ट एक इंडिया अपना एक डिफरेंस जो है वो प्रिपेयर करती है, और कैसे एज अ कंट्री हम अपने आप को और सिक्योर जो है वो बनाते हैं. Then India's foreign exchange reserves experienced an increase of 10.5 billion US dollar and reached total of 692.8 billion US dollar during the week concluded on July 31st.
This rise was primarily propelled by an expansion in its foreign currency assets, which constitute the predominant share of nation's overall reserves. According to the data released by the RBI, foreign currency assets, the largest component, augmented by 8.7 billion US dollar, elevating their total to 564.6 billion US dollar within the specified week. Further contributing to the aggregate increase, special drawing rights or SDR saw an increment of 48 million US dollar. What are SDR? This question has been asked several times. These are international reserve asset created by the International Monetary Fund to supplement its member countries' official reserves. Its value is based on basket of leading international currencies. So, ये भी important रहेगा. Then the next article is related to AgriStack, that is a farmer-centric digital public infrastructure designed as a public good to facilitate more efficient, easier, and faster delivery of services and schemes to farmers. Its aim is to create a comprehensive profile for each farmer, their details like their personal information, land records, crops cultivated, and assets such as livestock and fisheries. The infrastructure comprises three core fundamental registries that are linked to agriculture sector: farmer registry, geo-reference village map, and crop zone registry. These registries are developed and maintained by respective state governments and union territories. The Ministry of Agriculture and Farmer Welfare has developed AgriStack in strict adherence to the Personal Data Protection Act 2023 and Digital Personal Data Protection Rule 2025. This ensures the complete privacy of the farmer's data through consent-based collection model, granting farmer full control over their data and its sharing with authorized entities for specific purposes. तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू जो चैलेंजेस फार्मर्स फेस करते हैं उनको टैकल किया जा रहा है और फार्मर वेलफेयर के लिए जो है वो काम इस पे गवर्नमेंट जो है वो कर रही है. Then next, India's first privately built 800K and LOX methane rocket engine unveiled. Bangalore-based space company Astrobase has unveiled this first privately built full flow stack combustion LOX methane rocket engine, and they have named it Everest. This development makes Astrobase the fourth commercial company globally to successfully develop a high thrust FFSC engine. Neeraj Khandelwal is its co-founder and CEO of Astrobase Space Technologies. Everest represents a significant milestone for Astrobase efforts to bolster India's indigenous launch infrastructure and enhance reusable launch capabilities. It has confirmed that all critical propulsion design authority, system engineering, manufacturing knowledge, software and mission configuration will remain under Indian control. तो एवरेस्ट जो है ये एक इंडिया का है जो कि इंडिया की प्राइवेट कंपनी ने इसको डेवलप किया है और जैसे कि हमें पता है कि स्पेस एक्स है कंपनीज है जैसे स्पेस एक्स ब्लू ओरिजिन एरोजेट रॉकेट डाइन. These are significant player in the development of high thrust LOX methane and related advanced engine, and LOX methane propellants are propellant combinations for rocket engines that uses liquid oxygen and liquid methane. तो ये important रहेगा. और 800 kN मतलब ये इसका जो यूनिट है, it is a unit of force representing 800 kilo newtons, indicating the thrust capability of Everest engine. Then in sports, at World Athletics Under 20 Championship held in Eugene, United States, India's Mohammad Ashfaq distinguished himself by breaking the under 20 national record in the men's 400-meter race. This 19-year-old athlete clocked 45.81 seconds, securing a second place finish behind USA Dejan De Leon. तो मतलब इनका नाम याद रखिएगा कि ये इंडियन एथलीट हैं और वर्ल्ड Athletics, which was formerly known as International Amateur Athletic Federation, is the international governing body for the sport of athletes.
It oversees a wide range of athletic disciplines, including track, field, cross country running, road running, race, walking, etc. So this was all about 8th August current affairs news. Kindly like and subscribe our channel and we will meet in our next class.